inspiration that we may all understand the teachings of the Lord. We'll begin our session by collecting the minds together. थोड़ी देर समाधि का अभ्यास करते हैं, फिर आगे संज्ञा को समझने का प्रयास करेंगे.
Let us begin our reflection on Sanya. अभी हमने सुना भगवान का निर्देश संन्या को जानना चाहिए। संन्या क्या है? टेक्निकल साइंस में कहेंगे तीसरा खंड है, रूप वेदना संन्या संखारा, इस तरह से यूजुअली कहा जाता है। तो रूप क्या है वो स्पष्ट है क्योंकि अनुभव पे आता है। वेदना क्या है वो भी स्पष्ट है, कंपैरेटिवली अनुभव पे आती है। संज्ञा क्या है? संज्ञा अनुभव पे आती है क्या? ऐसी चीजें जो हम अनुभव कर सकते हैं कि ये संज्ञा है। क्या लगता है आपको? संज्ञा और रूप और वेदना और संज्ञा, संज्ञा कुछ अलग है ना? या एक ऐसा ही है जैसा रूप है वैसी वेदना है? Please kindly let's have some discussion so that it becomes, संज्ञा इज कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है बाकियों से। सर आई एम गेसिंग कि ये भी एक मेंटल फैक्टर है। हाँ वो तो है, मेंटल फैक्टर तो है, बट रूप और संज्ञा में कुछ क्लास डिफरेंस है क्या? वेदना, हाँ बोलिए जी बोलिए। सर सर मुझे लगता है कि डिफरेंस है बिकॉज ये संज्ञा जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ जो ऑलरेडी परसेप्शंस बन चुके हैं, जो मेमोरीज बन चुकी है और फिर वो जो उभर के आती है, आई थिंक मेरी ये ओपिनियन है कि संज्ञा को हम एज सच डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। इट इज ए खंड विच इज बेस्ड ऑन, आई थिंक, अंडरस्टैंडिंग कहें या क्या वर्ड कह सकते हैं इसको, और इट इज डिडक्ट, हम लोग इसको डिराइव मतलब इन्फर कर सकते हैं कि ये ऐसे हुआ, और इसको हम इन्फर ही कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। गुड। सर मतलब ये इट इज जैसे रिकग्निशन बोलते हैं तो, और आज जब सूत्र का पाठ कर रहे थे शिवेंद्र जी तो उसमें ये भी था कि संज्ञा भी हर इंद्रिय की अलग अलग होती है। तो यानी कि आंख बेस्ड रिकग्निशन, कान बेस्ड रिकग्निशन एंड सो ऑन। इंद्रियों के संपर्क से जब कुछ, जैसे अभी दीप्ति जी बता रही थी, मेरी भी यही समझ है कि राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड टिल डेट whatever has happened in our life and lives when we become strongly attached with that particular interaction and we carry it in our memory, तो वो संज्ञा का रूप ले लेती है। जी, तो संज्ञा शब्द जो है वो जानने के परिप्रेक्ष्य में संजानाति, जानना, इस तरह से यूज किया था, बट बेसिकली हिंदी में कहें तो पहचानने के शब्द में इस्तेमाल किया जाता है। अब उसके कई सारे नुआंसेस हैं एक्चुअली। पहचानना सिर्फ अपने में काफी नहीं है कहना। जैसे
कोई रूप हमने देखा, जैसे रूप संज्ञा की बात करें ना, रूप की संज्ञा, हम रूप को किस आधार पे पहचानते हैं। इसी तरह शब्द की संज्ञा, कोई शब्द सुनते हैं तो किस आधार पे पहचानते हैं, सो ऑन। तो जो पहचानने की प्रक्रिया है उसमें हमारी मेमोरी काम करती है। पहले हमने उसको देखा होगा, फिर उसको कुछ नाम दिया होगा। तो जो नाम देने की प्रक्रिया है, एक तरह से आइडेंटिफायर डाल देते हैं, हाँ ये शिवेंद्र जी हैं, ये महापन्य हैं, ये सो मैं अभी आप लोगों के रूप ही देख रहा हूँ। तो रूप के आधार पे आप लोगों के एक नाम है मेरे मन में कि ये नाम है, तो रूप संज्ञा हुई। लेकिन उसका एक और भी कनोटेशन है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि खासतौर पर जब हम किसी को बारे में अपना ओपिनियन बनाते हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो थोड़े गुस्सैल हैं, ये थोड़े मैत्री वाले हैं, ये तो सो क्रिएट ए डेफिनेट एक दृष्टिकोण बना लेते हैं अपने, तो वो भी एक संज्ञा में आता है कि दृष्टिकोण क्या है हमारा। किसी चीज को देख के ही दृष्टिकोण बन जाता है। तो संज्ञा की उत्पत्ति कैसे होती है तो शायद और समझ में आएगा, क्योंकि भगवान ने कहा था संज्ञा की उत्पत्ति के कारण को जानना चाहिए। कैसे उत्पत्ति होती है? किसी भी इंद्रिय के द्वार पे स्पर्श होता है, तो जो स्टैंडर्ड हमारी अंडरस्टैंडिंग मधुपंडित सुत्ता ने बनाई है वो क्या है, आपको याद होगी, मैं बार बार कोट करता रहता हूँ उसको, कि चक्षु का जैसे उदाहरण लें, चक्षु च पटिच्च रूपे च उपजति चक्षु विज्ञानम, चक्षु विज्ञान जागता है। तीनम संगति फस्स, तीनों का कोऑर्डिनेशन फस्स कहा गया। फस्स पच्चया वेदना, तो जो वेदना है उसके आधार पर जागती है। और फिर उससे आगे जो भगवान वो उसमें महाकच्चायन कहते हैं, अप्रूव्ड बाय द बुद्धा इज, जो आप महसूस करते हैं वैसा परसीव करते हैं। हम वेदेति तम संजानाति, और जैसा परसीव करते हैं फिर उस हिसाब से विचार करने लगते हैं। किस आधार पे? पास्ट के आधार पे। बेस्ड ऑन योर पास्ट यू थिंक अबाउट दैट, यू प्रोलिफरेट। और ये हर इंद्रिय के द्वार पे यही होता है। तो ये तो हुआ जब हम कोई चीज ऐसी देख रहे हैं या सुन रहे हैं जो हमने पहले देखी हुई है, तभी तो उसके बारे में प्रोलिफरेशन होगा। और कोई बिल्कुल नई चीज है तो क्या करेंगे? पहली बार किसी चीज को देख रहे हैं तो उसके बारे में कैसे संज्ञा जागेगी? तो हमारे पास कोई पुराना उदाहरण नहीं है जिससे हम कंपेयर कर सकें। अगर मैं पहली बार किसी को देख रहा हूँ तो मैं I can't recognize, I can't give a name or a label to it, but still I form an opinion. ये बड़ी विचित्र बात है, आपने शायद देखा होगा। मैं कई बार नोट करता हूँ, मॉर्निंग वॉक में जब जाता था ना, इतने लोग घूम रहे होते हैं, तो किसी को देखते हैं तो लगता है ओ बड़ा शांत चेहरा है, मस्ट बी a very stable minded person. I don't know him or her, I have no idea whatsoever. But just on the basis of the facial expression, I form an opinion. And how do I form an opinion? Again, compare with my previous experience or knowledge. And then I am looking at those face features which are familiar or different. मैं मान लीजिए कुछ लोगों से मिला हूँ जो बहुत शांत रहते हैं, कुछ ऐसे भिक्षु से मिले हैं जो बहुत शांत रहते हैं,
उनका चेहरा एक तरह का दिखता है, तो उसी तरह के जो हाव भाव दिखते हैं तो हमको लगता है ये भी वैसा ही होगा, सो वी फॉर्म एन ओपिनियन, तो एक संज्ञा बना देते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स दैट में चेंज डिपेंडिंग ऑन इंटरेक्शन एंड सो ऑन। तो उस हिसाब से हम लेबल दे देते हैं, फिर एक डेजिग्नेशन भी दे देते हैं, हाँ ये ऐसा है वो वैसा, तो एक दृष्टिकोण भी हमारा बन जाता है। तो ये सारी चीजें संज्ञा के काल, तो अब देख सकते हैं कि वो कितना एक अनस्टेबल सी चीज है कि अपीयरेंसेस के आधार पे हम ओपिनियन बना रहे हैं। और यार बचपन में छोटे बच्चे हैं तो कोई कहेगा हाँ ये तुम्हारा चाचा है, तुमने पहली बार देखा, ये तुम्हारी मामा है, and then you hear people talking about चाचा or about मामा and then you form an opinion, वो ऐसे हैं, ये वो ऐसे हैं, ये है। So it's all based on appearances. So जो हमारा एक स्टैंडर्ड सुत्ता जिसपे हम विभिन्न खंडों को समझने का प्रयास करते हैं, फेन पिंडक सुत्ता, जिसमें उपमाएं दी गई हैं ताकि उपमाओं के आधार पे हम ठीक से समझ पाते हैं। रूप की उपमा क्या है? एक फोम, लंप ऑफ फोम की तरह था। वेदना की उपमा थी water droplets falling on pond and creating bubbles. And what is the upma given for sanya? It's like a mirage, a shimmering mirage. भगवान कहते हैं कि गर्मी के दिनों में जो हम सब देखते अनुभव करते हैं, गर्मी के दिनों में सड़क के ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो दूर पे ऐसे लगता है जैसे उस पर रिफ्लेक्शन नजर आता, लगता पानी है वहां पे। तो मरीचिका, पाली में भी हिंदी में भी मरीचिका कहते हैं, मतलब एक भ्रम है नहीं वैसा, वो भ्रम है, ये ऐसा लगता है। And now when of course the Buddha as usual would say, a person with good sight would see it and contemplate and examine it carefully, and it would appear to him that it is completely void, hollow and insubstantial. For what substance could be there in a mirage? In the same way, a meditator sees and contemplates any kind of perception at all and examines it carefully, and it appears to him as completely void, hollow, insubstantial. Or what substance could there be in a perception? That's something worth contemplating, because our life is very strongly governed by perception. जैसे हमने भी सुना था, perception का विपाक क्या है? व्यवहार में वो प्रकट होता है, व्यवहार के रूप में। In our speech, in our actions, that perception manifests in that, influences it strongly. अगर हम कोई ऐसी चीज देख रहे हैं जो पहले हमने पहचानी हुई है, तो वेदना जो जागेगी वो भी परसेप्शन के हिसाब से जागेगी, परसेप्शन विल मॉड्यूलेट दैट। और कोई चीज पहली बार देख रहे हैं तो वेदना जो जागती है वो पास्ट कनेक्शंस, कोई मेमोरी, कोई किसी तरह की बात पे आधार पे जाते हैं, और फिर उस वेदना के आधार पे हम संज्ञा बनाने की कोशिश करते हैं। So it's all like play, a drama which is going on, and but it has such a strong effect on our life. अब इंग्लिश में जब वर्ड यूज करते हैं परसेप्शन तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, आपको शायद नोट किया होगा, क्योंकि अगर आप डिक्शनरी में परसेप्शन शब्द का अर्थ देखेंगे तो उसके दो अर्थ हैं। एक है एबिलिटी टू नोटिस समथिंग बाय सीइंग, हियरिंग, स्मेलिंग। Now this is actually called vijnana. In the technical language, it should be called vijnana, not perception or sanya. But some teachers, very prominent ones, use the word perception for that. So, dictionary कहती है the process of perceiving something with the senses is perception. That obviously is not sanya. Then the second definite meaning is given, a particular way of understanding or thinking about something, an interpretation of an impression, an opinion or a belief. Then the examples are given in the dictionary, which is very correct. There's a perception that this management only wants to cut costs. Typical view in a company, in a corporate sector. Public's perception of this leader is slowly changing.
and we know how important it is. So this is the meaning of the word sanya actually. हम कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं चीजों को, वस्तुओं को, व्यक्तियों को, परिस्थितियों को. And obviously depending on कैसी चीज है, वो रूप है कि शब्द है कि गंध है, हर एक की अलग अलग हमारा परसेप्शन होगा. इसलिए चैंटिंग में कहा गया रूप संज्ञा एक है और गंध संज्ञा एक, शब्द संज्ञा एक है और रस संज्ञा एक. They are different. Don't mix them up. Very important advice in that small section of that sutta. So let us discuss today something more about रूप संज्ञा. तो उसका एक तरीका यही है कि मैं आपको कुछ रूप दिखाऊं और आप उस पर कमेंट करके देखें how your sanya operates. Okay, so we'll start with static forms and some pictures which I have collected. मैं आपको अभी स्क्रीन पे ही दिखा देता हूँ. आपको दिख रहा है स्क्रीन? हाँ सर. Okay. Now we'll do some small exercise in order to really understand how our mind works and identifies makes रूप of sanya. तो जैसे जैसे कई सारी फोटो है, एक फोटो आती है, kindly look at it for 10 seconds and whatever thought comes to your mind, put it in the chat box. Okay, you can mark it to everyone, doesn't matter, because then we'll have a chance to discuss. Okay, so जो first thought आता है उसको देख के just put that, write it down, whatever it is about that picture which you see. Then we'll have some interesting discussions on that. Okay? Please write down quickly. Don't contemplate too much. Just immediate perception जो उसका बनता है उसको लिख दीजिए. Good, thank you. Now I'll show you the second picture.
So please put down quickly. Don't think too much. Please do write whatever comes to your mind. Don't bother about whether it's right or wrong. There's nothing like right or wrong. It's an exercise in letting the mind work.
Thank you for giving response. I would now request you to scroll all of it. Go through right from the beginning and see how different people have different opinion about the same thing. And look at your own opinion and see what could be the reason for my opinion of that kind. How did this kind of a perception form? Obviously you can't talk about others, but about myself I can see, then investigate. अच्छा ये मैंने इस फोटो को देख के ऐसा परसेप्शन बनाया, इसका क्या कारण था? I hope you remember the photographs and then see if you can figure out how the Sangya is created. Sangya की उत्पत्ति को समझना चाहिए, that you can see that. Just quickly you can scroll through them and see. In some cases it may be evident, in some cases it may not be evident, doesn't matter. But you can see the kind of differences different people have about the same thing. Different people look at it differently. And why did I interpret that in a particular manner? You try to see that, then you'll be able to figure out the deep-seated impressions in the mind which are operating to create my perception of the world. And the power of perception is obviously phenomenal. When we talk of looking at everything as anicca, dukkha, anatta, that also is a perception. And last year we discussed sannyas in great detail, various kinds of sannyas. That is of a, the way we look at it, it depends on that, really. So that gives us enough food for thought, really, कि किस तरह से हमारी संज्ञा जनरेट होती हैं. I would like to give this PowerPoint to you, but I don't know whether it can be, how to put it in the, how to share it with you. That's, I don't know. So maybe I'll send it to Aranya Vihar Trust and then you can do something with it and share it with others. So that during the day, आज Saturday है, तो आप अगर चाहें, so you can go through that again and see how you responded to that. You can copy this chat, whole thing would be available. You can save this chat. Is it possible no, to save? Yes, sir. I can even circulate the chat when I send the information. Okay. I'm wondering कि मैं Dhamaram announcements group में डालूं क्या? So I wouldn't know who all had joined today. I mean, I can know, but I don't have everybody's contact. I don't know. Okay. या तो सर फिर मैं कल मैं इसका लिंक डाल दूंगी जब चैट पे वापस सब लोग सुबह आएंगे. We can save it all in one place, but I think you'd like it to happen today. Yeah, ताकि आज Saturday है ना, so we can see that. So, is there some way to put the this? सर मैं सबके कांटेक्ट एक बार मैं देख लेती हूँ आज कौन आया है. I'll just make a note of it and then we'll figure that out. और जिनकी contacts मेरे पास नहीं है, I'll ask them. Or maybe we request everybody to just send a message to Deepthi and then she can share it with you. So there'll be a good solid exercise of looking at our own minds. Actually, there's a method of looking at our own minds. How do we form opinion, you know? Some people may recognize some things which are seen there. There's something from a city and people, some of you recognized, I could see, some of you could recognize them. Some could not, though they are living in the same city. See, that's an interesting thing, isn't it? And different people have different opinion about things. It's quite natural because we have certain biases, prejudices. That bias and prejudice
is really what reflects in our perception. कई लोग कुछ प्लेस को जानते हो सकता है वहां गया हो, कोई अफगानिस्तान गए हो, 2 फोटोएं तो जयपुर की थी, so one of you could recognize, another could not. So that's a matter of just seeing it, and because how strongly you see that, because there are symbols inside which are unique to the place. So you can see that कि हम किस तरह से opinions form करते हैं और कैसे हमारे opinion हमारी past conditioning से, हमारी prejudices से बनते हैं. अब एक साधु को देख के अगर आपके मन में आता है कि ये fake है, that is one thing. किसी के मन में आता नहीं, he looks like a sannyasi, he doesn't make that comment fake. Well, that shows something, isn't it? Similarly, when you look at that photograph from a metro station, you make somebody said China, somebody said this, somebody said that. It all depends on whether one has a background of that photograph available, because that belongs to a certain country, or not. So हमारी रिकॉग्निशन में वो है या नहीं है, या फिर हम एक जनरल ओपिनियन उस फोटोग्राफ को देख के, अपनी पास्ट कंडीशनिंग को देख के जनरल ओपिनियन बना देते हैं. So that's how संज्ञा gets created. Because these are all static photographs. When you look at videos, then another dimension is added. We'll do that tomorrow. I think enough time I have taken today. Are there any comments or queries? You can ask me. Maybe some discussion, if it emerges, that will be very good. सर क्योंकि अभी वी जस्ट बिगिनिंग संज्ञा, तो आज के लिए कम से कम मेरे लिए 2 टेक अवेज रहे कि संज्ञा वो भी वेदना की तरह सब सेंस डोर्स पे देखना है. दैट वाज लाइक अ बिग थिंग. एंड सेकंड इज कि हाउ वेरीड आवर परसेप्शंस आर. और मैं ये भी देख रही थी कि एक ही फोटो को कई बार मैंने बहुत जगह मैंने इंस्टेंट रिप्लाई दिया. इंस्टेंट परसेप्शन वाज डिफरेंट, एंड इफ आई स्टेड फॉर कपल ऑफ सेकंड्स, even in 10 seconds my perception, like what became more important, changed within 10 seconds. Yes. Yeah. Some kind of a defense mechanism starts operating. कि मैं अगर ये लिख दूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, that I shouldn't write down, if I'm looking at a picture of a woman, I write down lust, oh, that my image will get spoiled, so let me write something better, let me write something neutral. These things operate so subtly that to be able to figure it out is quite tough. And that's where the penetration into the nature of reality is so crucial. हमारे मोटिवेशंस क्या हैं, हमारे किस बेसिस पे हम कुछ कह रहे हैं, वो हमें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि हमारी एक सेल्फ इमेज जो है वो कहीं ना कहीं उसके साथ मिक्सअप हो जाती है. नॉट ओनली दैट, हमने कुछ लिखा और किसी और ने उसके बहुत कॉन्ट्रास्ट में लिखा, तो वो मतलब माइंड उसको एडजस्ट भी नहीं कर पा रहा है. सो दैट स्ट्रगल. ये क्या हुआ, ये इसने तो कुछ और ही लिख दिया, मैं कुछ और लिख रहा हूँ. Naturally so that's the duty of such simple exercises like that, it challenges us very much. So इसको आप दोबारा देखेंगे तो I'm sure you'll form different opinion. मेरा ये कहना था कि is it also possible because of the age, the age also plays a very important role. Perceptions will differ of a person of a youth from a person of 70s. Yeah, of course. Completely of the same thing. Yeah. Due to the exposure and due to having, there are many conditionings which are behind it. More the age, more the conditioning, and therefore the complexity of assessment of anything.
एक बच्चा हो उसको आप सारी दिखा दो तो इंटरप्रेट इन एब्सोल्युटली डिफरेंट मैनर फ्रॉम एनी ऑफ अस। एक 5 साल के बच्चे को कहो अच्छा देखो फटाफट बताओ क्या है, you put it in a very funny way. You can try it out with your nephew or a small grandson or something and still finding क्या कह रहे हो, मुझे तो कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा जो तुम्हें दिख रहा है। सर ये चैट बॉक्स के कमेंट्स देख के भी डिफरेंट ओपिनियंस आ रहे थे, जैसे डिफरेंट थॉट्स। मान लीजिए आपने लिख दिया, फिर आपने चैट बॉक्स में देखा अरे ये तो कुछ और ही लिख रहा है, मे बी दैट इज right, this is not right. No, we come into that picture of right and wrong, and then of course the mind has its own ways of determining right क्या है wrong क्या है, जबकि इसमें कोई right wrong का मतलब ही नहीं है। और सर जैसे कुछ कमेंट्स में हंसी भी आ रही है, मतलब जॉय टाइप में, और कुछ फनी लग रहे हैं, सो और कुछ में एकदम सीरियसनेस हो रहा है। इवन ये चैट बॉक्स में जो कमेंट्स उनको पढ़ते हुए, Yeah, that's why I think we'll all like to read it. I'll also like to go through them again. मैं भी देख नहीं पाया ठीक से, so please share it with me also so that I can see that again during the day. Thank you. So I think it's time. Anybody else? Anything you want to say? सर नमस्कार। सर जैसे ना मुझे एक ऐसे कई जगह पे कुछ शब्द नहीं आ रहे थे, बस खाली फीलिंग आ रही थी देख के। तो जैसे वो बुजुर्ग थे जो उसके किनारे वॉक कर रहे थे, सी के किनारे, तो वो देख के ऐसे एक साथ चलने का भाव है, तो उनको मतलब समझने का भाव ऐसा आ रहा था। तो उसके लिए कोई फीलिंग नहीं, मतलब शब्द नहीं आ रहा था, बस एक फीलिंग आ रही थी। तो उसको कैसे अगर कभी लिखना हो तो लिख लो। That's a you have to figure it out. I can't tell you how to perceive things, isn't it? That's what we have to figure out ourselves, how we perceive. वो जो फोटो थी उसको देख के somebody wrote Goenka ji. I was very happy to see that. How interesting it is, isn't it? Yes, sir. Thank you, sir. So it's so beautiful to see the minds operating and how impressions get related to things. And then there was one painting of confusion. It is actually a masterpiece by Aiskar, who was famous for drawing pictures which will challenge science. That actually is a challenge to the what's called, that you can't get energy continuously, a challenge to the laws of thermodynamics. If you look at it directly, it seems as if water is going up, falling down, and then again going up, falling down. So it's perpetual motion machine. It means it will constantly giving you energy. Obviously, that's not going to happen. So the artist has drawn it in such a manner that you can't figure out ये क्या हो रहा है, इसमें गलती क्या है. So that's the power of that artist. Of course, he's known for making such pictures which throw your perception totally off. You can't figure out ये गलत क्या है इसमें यार, ये लग तो ठीक ही रहा है, पानी जा रहा है ऊपर और गिर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, तो ऐसे तो चलता ही रहेगा ये, तो फिर तो बिजली पैदा होती रहेगी कंटिन्यूअसली. But if you look at it very carefully, then you figure out, oh, see, it created an illusion actually, and you're not able to see it. Very powerful things made by some people like that to challenge our perceptions. Good, thank you very much. So over to Bhante ji. They appreciated कि एक ही चीज को अलग अलग लोग अलग अलग तरह से इंटरप्रेट करते हैं, और उसी चीज को हम अगर 2-3 बार देखेंगे तो धीरे धीरे हमारा इंटरप्रिटेशन भी बदलता शुरू हो जाएगा. So that shows how unreliable our perceptions can be. And of course ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, ये स्टैटिक पिक्चर है. And you see, actually in life, we are not going to see static picture. We see people in action and something's happening, somebody speaking. तो अभी हम सिर्फ रूप की बात कर रहे हैं, इसलिए अलग कर दिया.
So when we see the dynamic pictures, say actions happening, then the impact is obviously much stronger because it looks more realistic. वो ख्याल नहीं रहता कि वीडियो देख रहे हैं कि नहीं. It's we get kind of zapped by it and think it is actually happening. And then, of course, it's at some level it is happening. Actors are doing something, or it may be a realistic video. But then the impact will be much more. And you can see that in certain conditions, the impact has much lasting, it can have a very lasting impact. Static pictures का बड़ा limited impact होता है. जबकि अगर कोई message convey हो रहा है through a video, it can have a very strong impact. It can change our sanya altogether, and sometimes for good. And that's the power. Of course, if you have audio and video together, then the impact is even greater. So we'll try to see these fine points of sanya in various stages, जैसे जैसे हम आगे चर्चा करेंगे इसकी. So we'll stop there. किसी को कोई comment करना हो, कोई प्रश्न हो, कोई चर्चा करनी हो, तो we can have some discussion. सर नमस्कार. सर सवेरे जब मैंने कुछ पिक्चर्स देखी थी और अभी देखा तो उनमें ना फर्क था. मतलब जो एक संज्ञा जागी थी उसमें फर्क था. जैसे सवेरे एक वो ऑटो के पास जो गंदगी पड़ी थी वो वाली पिक्चर में जैसे सवेरे मन था साफ करने का, तो अभी दो विचार आए एक के बाद एक कि एक तो साफ करने का और दूसरा कि ये भी एक सत्य है कि ये जो गंदगी हो रही है ये भी सच्चाई है. तो ऐसा आया भाव. Is for each one of us to see how our thinking process is changing within a few hours. So obviously, the reliability of our perception and the judgments we make about people, how reliable they are, you can easily see that from my actual experience, very short, small experience. I also see it like this because, as I said in the morning, the conditioning is it plays a very important role. As when I see this picture, whichever picture I saw and commented, it is, there is always something behind in the mind. I'm perceiving it based on what I have experienced in my life so far and my reaction to the events which are happening around. तो उसके बेसिस पे इन पिक्चर्स को पूरा मैंने एनालाइज किया. सो डेफिनेटली दिस वाज द परसेप्शन अबाउट दीज थिंग्स हैड ऑलरेडी डेवलप्ड. सो देयर वाज नथिंग. जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि वो एक मेट्रो स्टेशन पे देयर इज अ टेररिस्ट स्ट्राइक दैट माइट बी देयर. somebody wrote that somebody is waiting for a criminal to catch that person. ये सारा मैंने तालिबान को टेररिस्ट दिखाया तो ये मन में पहले ही भाव बना हुआ है इस तरह का कि ये टेररिस्ट ऐसे. सो देयर आर, हम सब के अलग अलग परसेप्शंस हैं. ऐसा समझ में धीरे से आ रहा है. मुझे भंते जी का बड़ा अच्छा लगा जब उन्होंने टैटू जिसपे बनाया उसको आपने जिस तरह से डिस्क्राइब किया. दैट वाज रियली, आपको प्रणाम. बहुत जबरदस्त. सर जैसे पिक्चर आई और किसी जो उसमें कोई पर्टिकुलर कई सारे ऑब्जेक्ट के आइटम्स है, तो एक पर्टिकुलर आइटम पे जब दृष्टि गई तो उस वक्त संज्ञा जो थी और थोड़ी देर रुकने के बाद जैसे दूसरे आइटम पे या उस दूसरे ऑब्जेक्ट पे जब नजर गई तो संज्ञा भी साथ में चेंज होती रही. जैसे एक पहाड़ था, नदी थी और फ्लावर्स थे, तो नजर फ्लावर पे पड़ी, फिर पहाड़ पे पड़ी, फिर वो चेंज हो, संज्ञा चेंज हुई. है वो not very attentively seeing that the interpretation changes.
No, if you look at them again and look at more carefully, you'll find there was many things which were there in the picture which you didn't note at all, and they would change the interpretation. For example, whether that girl is entering the metro station or leaving the metro station. So that because how can I find out? If you look at it very carefully, you'll find out. So that's the way we get a kind of a limited view. We focus only on what is prominent. दूसरी चीजें छूट जाती है और इस कारण से हमारा assessment भी faulty हो जाता है कई बार. So these are the small things which have a great impact in our life because that's what happens in our day-to-day interactions. The prominent जो चीज आती है हमारी सेंस डोर पे वो हमको ज़्यादा इम्पैक्ट करती है. किसी ने बहुत ज़ोर से बोला वो इम्पैक्ट करता है. हमने उसकी शक्ल नहीं देखी, वो बोलते टाइम उसकी हालत क्या थी. हम उसकी शक्ल से लगा चलेगा ये तो पहले ही बहुत दुखी है यार, उसको क्या कहूँ मैं. तो अपने ही दुख को प्रकट कर रहा है उल्टा सीधा बोल के. I have not seen it carefully, you know, that attentiveness and that sati is of great help. Thir sanya, उसमें आता है ना thir sanya, stable and clear seeing. So if we have a clear seeing of something, the very likely हमारी उसके बारे में opinion different होगी than when we see it in a superficial manner. You can verify it. So I will request Deepti to send it again. अभी भी कुछ लोग है ना जो सुबह नहीं थे, you can send them again. I'll send this revised PVT to you and then you can send them. I would suggest that tomorrow, so during this Sunday, तो आप उसको you can play at your own time, at your own convenience. Look at it more carefully and see. Maybe everybody has missed some of the things because time given was very limited. Because we wanted to see immediate impact, not the calculated way of thinking about it. यही जो है हमारे जीवन में होता रहता है. This brings me to another speculation. I don't know whether this is right or not. जो एक बार हम फर्स्ट और अविजा की बात कर रहे थे. So perhaps that also comes out here because probably first and अविजा का जो relation है, it has to do with the quality of attention. So if the quality of attention is good, that's one kind of contact. The quality of attention is, I don't know whether I'm right to understand it that way. हम ऐसे कह सकते हैं the point which is made is कि भाई अगर हम attention दे रहे हैं और कितना attention दे रहे हैं तो उसको आप quality कह सकते हैं. You can say it in that manner. जैसे आपने clarity बोला, clear seeing. Yeah, So that is a technical word for it. थिर संज्ञा. तो कहा जाता है सती का proximate cause क्या है? दो proximate cause. एक तो है कि सती का ही अभ्यास करते हैं. दूसरा है थिर संज्ञा, seeing things very precisely, and then you'll automatically become more mindful because precisely seeing it demands a lot of attention. उस sense में आप you're right, you can say we are being more attentive. जैसे एक पिक्चर जिसके बारे में अभी शिवेंद्र ने भी बात की थी कि पहाड़ है, लेक है और फूल है. अब ये भी उस पर डिपेंड करता है कि आपके पास्ट में आपने इस तरह का कोई ऐसा सीन देखा, वहाँ पे आप कहीं रहे इस तरह की जगह में, और अगर ऐसा कोई आपके साथ गुजरा है पल जो कि आपके मन में काफी उसने अच्छा इम्प्रिंट डाला है, तो you can immediately identify yourself with that particular picture and give your comment based on the perception that you had when you for the first time visited such a place. We are also saying that there may be things which we have not seen earlier. ऐसा भी तो होता है ना. हर चीज हम कभी ना कभी पहली बार देखेंगे.
उसको भी आप मान लीजिए कि वो पहली बार देखी गई. आई कैन टेल यू, मैंने जब सर्च किया था, आई हैड रिटन वैली ऑफ फ्लावर्स. आई डोंट नो वेदर इट इज एग्जैक्टली दैट और नॉट. उत्तराखंड में एक जगह है जिसको वैली ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है, काफी हाई अप इन द माउंटेन्स. तो वो जब देखा था तो मुझे ये लगा, तो मैंने कहा ठीक तो है चाहे ना हो, इट्स ए picture which attacks your attention very strongly. So I just put it. Maybe it is that. One of you had written actually that it is Valley of Flowers. So maybe he has visited that and known that. I don't know. I have not visited. But the impression you get from that picture is beautiful. Having visited Kashmir long back as a child, we have certain memories of good gardens, good flowers. In any case, anybody will like flowers. There is a general human tendency to like them. Beautiful colors, and then river and mountain. They're generally, because they don't create any spirit, they reduce the sense of self temporarily. That's the reason we like the mountain, because there's no way we can kind of have a ego arising on seeing a mountain. It's just too humbling to allow any such thing to happen. You just get overawed by looking at a mountain with the snow and lake or river or sea. Why does sea humble people? Because when you see sea, it's such a huge vastness that you feel like an insignificant drop in there. And that for a moment, the sense of self is curtailed and you feel relief. So these are the kind of reflections which emerge when you see things more and more clear. Sense of self. कुछ पिक्चर्स थी जिससे एवर्शन भी हुआ. हाँ बिल्कुल, कई पिक्चर्स ऐसी थी खास तौर पे रखी गई थी जिनसे एवर्शन, डर्टी थिंग्स एंड typical Indian standard of urinating anywhere you like and things like that, right? Now, if somebody is living in that city, because there are some names of shops and some particular color of shops, we know where that color is. That color shops are only in one particular city. So then one may feel a very strong feeling of identity with that. Ye kya ho gaya? So you can see the mind playing tricks as if that belongs to me and therefore this should not be so. It should be nice, it should be clean. So how identity gets created immediately. सर एक ये भी है कि अगर कोई इमेज को हम समझ नहीं पाते, जैसे कह भी रहे थे, आप भी कह रहे थे कि where there is no prior recognition, वहाँ पे माइंड में एक बेचैनी होती है. there is a need to understand what it is. जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में भी होता है, उसमें से फिर लोग मीनिंग निकालते रहते हैं. और यहाँ पे मुझे पर्टिकुलरली वो जो एक ग्रे स्केल जैसी इमेज थी कि कुछ पेंटिंग टाइप की थी, उस पे कुछ वाटरफॉल जैसा बन रहा था, वो मतलब मेरे दिमाग में वो फिट ही नहीं हो रही. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ पजल टू मी, एंड इट्स क्रिएटिंग लाइक आई वांट टू अस्क्राइब समथिंग टू इट, टू से कि ये कुछ तो है. एंड I don't know what is the source of that bechani, but I just sensed that. Because we're not comfortable with uncertainty. That is a basic thing. Anicca is very uncomfortable. Very basic, जैसे अनिच्छा का जानचा कहते हैं, it's also uncertainty. We are not sure what it is. Is it threatening our perceptions? Is it threatening our understanding? For example, as a science student, it threatens you. Immediately लगता है ये क्या हो रहा है यार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. And then you start seeing this way, that way, and rationalizing in our mind something. अच्छा ये आइस्कर की पेंटिंग, आइस्कर is known to create such paintings which people can't figure out क्या हो रहा है, and they get lost in them forever. And his whole idea was to kind of challenge our rationality. That's the whole idea of his paintings, to challenge the rationality, which whatever various kinds of rationalities. He'll show, अगर आप उसमें ध्यान से देखेंगे तो उसमें स्टेयर केस ऐसे दिखाए गए हैं, वो कहीं कहाँ शुरू हो रहे हैं कहाँ खत्म हो रहा है पता ही नहीं चलता, बट लगते बिल्कुल रियल हैं. They seem to, so this is kind of typical of his, that is a great master, Austrian artist,
make such paintings which people will not be able to understand, and check your rationality where it operates, and it just threatens it, and it threatens its uncertainty, uncomfortable हो जाता है फिर अरे laws of physics गलत हो गए क्या, ये क्या हुआ? Now for a person like me, anybody who has been an engineering student, he knows whole of his life he has been believing in a particular principle, and that is threatening it. The drawing is threatening it कि ये तो perpetual motion machine बन गई यार, ये क्या हुआ? पानी आ रहा है जा रहा है, मशीन चले जा रही है, तो कभी खत्म ही नहीं होगी, ऐसे कैसे हो सकता है? Now you try to find fault somewhere, and then so it's a kind of very insightful thing to see that and see how the mind reacts to it, how it becomes uncomfortable कि हमारे सारे basic ideas जो हैं वो challenge हो रहे हैं. It's pretty uncomfortable कि आपके सारी हमने जीवन भर पढ़ाया लोगों को perpetual motion machine नहीं होती, ये कह रहा है देखो तो लग भी रहा है तो चल ही रही है, इसमें गलती क्या है? And you see it carefully, गलती क्या है? उसने ऐसा बना दिया कि लगता पानी ऊपर जा रहा है अपने आप ही. You can't figure out. So that's the power of that painting. So it challenges us. So and that's true in our life. Whenever we see something happening which we can't understand, हालत खराब हो जाती है. You just can't see क्या हो रहा है. जैसे बीमारी कोरोना फैली थी तो doctors are puzzled, ये हो क्या रहा है? Because they didn't have any previous experience of the disease. They didn't know what to do. Trials and errors, ये दे दो, वो दवाई दे दो, ये दवाई दे दो. Hundreds of people died because there's no prior knowledge about it, and the doctors got panicky because I मालूम ही नहीं क्या करना. That's what happens in life also. Some situation arises in life which is totally inexplicable. क्या हो गया suddenly, क्या हो गया ये? And you find it shatters the mind totally. And you can fall into depression, one can fall ill. I was looking at some videos today for our subsequent discussions, and there was a video about Dr. Viktor Frankl. And he's a professor in Vienna, and suddenly lifted along with the family and sent to the concentration camp. Imagine what would be the state of mind. He, his wife, his father, his mother, ले गए और डाल दिए concentration camp. It's absolutely shattering. I can't understand ये क्या हो रहा है? What is going on? It's totally ununderstandable thing. Because it never happened. It has never happened. There's no past experience of that kind. Then you try to find some way to survive. So that's what is the difficulty of handling uncertainty. बहुत मुश्किल काम है. And this very small thing, you know, uncertainty of a painting. How does it? So it doesn't make really much effect on our lives, but even that creates disquiet. So imagine same thing happening actually in the life. How much disquiet it would create. And we know from our own experiences, some events in life created tremendous turmoil. So you're not able to understand ये हो क्या गया. Can't understand the reason, you can't understand the consequences. Absolute uncertainty. On our mental response to these things, then we develop insight into the nature of mind, how the mind works, how sanya works, how Vedana works. They're all intertwined. इसको जबरदस्ती हम इसको separate कर रहे हैं. रूप, वेदना, संज्ञा, they're all working together. यहाँ पे रूप भी है, संज्ञा भी है, वेदना भी हो रही है. Unpleasant, pleasant लगता है. And now we're trying to see the one particular aspect, one slice of our experience. कि संज्ञा role क्या play कर रही है? That's what we're trying to understand. And it's very important actually. Okay.
हम कई बार सोचते हैं संन्यास समझ में आ गया, हाँ परसेप्शन है, देख लिया कैसे हम समझ रहे हैं, कैसे चीजों को पहचानना सिर्फ उनकी फॉर्म की बात नहीं है, साउंड की भी बात है, उनकी स्मेल की भी बात है, उनके टच की भी बात है, और इट्स टोटली डिफरेंट रिकॉग्निशन इन ईच डोमेन। ऐसे भगवान ने कितना एम्फेसाइज किया, अन्य रूप संज्ञा, अन्य शब्द संज्ञा, गंध संज्ञा, एंड सो ऑन, repeatedly is emphasized. So it's a challenge for us. We'll do it slowly, because roop and shabd have a very strong effect. Not because they are something particular, but because we live with eyes open. क्या करें? वो आँख खोल के जीना पड़ता है, वो कान बंद नहीं कर सकते, वो कुछ कहेंगे सुनना ही पड़ेगा. We are helpless. We have some help regarding food. भाई जब खाना तभी खाए, कंटिन्यूसली नहीं खाए. स्मेल पे भी कुछ हेल्प है, कुछ चेक है, टच पे कुछ चेक है, बट आँख और कान पे कुछ चेक ही नहीं है. तो इफ यू आर इन वेकिंग स्टेट, योर आईज आर ओपन, यू आर सीइंग समथिंग और द अदर, and you are hearing something or the other, and therefore it is constantly bombarded. So eyes and ears have a tremendous impact on it. That's why we are trying to study it more deeply. Anything? सर मॉर्निंग के डिस्कशन में एक बात आई थी कि संज्ञा हम बनाते हैं और संज्ञा बनती है. सर इस पे थोड़ा सा मेरे को क्लैरिफिकेशन चाहिए था, क्योंकि अभी तक मेरी ये समझ है कि वो बनती है, बट इसमें आपके विचार से बनेगी कैसे? सर हम देख रहे हैं इंद्रियों से और प्रोसेस होके पहचानेंगे कैसे, किस आधार पर पहचानेंगे? सबसे पहली बात, जो बच्चा होता है वो किस आधार पर पहचानेगा? उसको कुछ आप म्यूट में हैं सर. कोई चीज देखकर खिलौना दिखाते हैं, उसमें ये कार कहते हैं, कोई कहता है उसको तो वो समझता, फिर वो याद करता, अच्छा ये कार होती है, धक्का देता है चलती है, इसमें चाबी लगाओ तो चलती है, और उसको तो रिमोट है तो चलती है. somebody has to tell him, he's being conditioned, constantly conditioned. ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारा चाचा है, ये तुम्हारी. Slowly and slowly we keep on creating recognition. We create recognition in the minds of children, and that is how recognition happens. बड़े होते हैं, लेबोरेटरी में जाते हैं, टीचर बताता है ये केमिकल है, ये इंस्ट्रूमेंट है, एंड सो ऑन. कैमरा खरीद के लाते हैं, किसी के पास कैमरा देखते हैं, क्या भाई इसे फोटो खींची जाती है, देन यू मेक रिकॉग्निशन, देन यू रिमेंबर इट, अच्छा इससे फोटो खींचते हैं, फिर खींच के देखते हैं, फिर सीखते हैं. सो इट्स ऑल थ्रू conditioning. By naming is done through conditioning, by learning from others, and as we grow up our knowledge base increases, and then we begin to learn from our own experience. जैसे जैसे नॉलेज बेस बढ़ता है, हमारी संज्ञा का बेस बढ़ता चला जाता है. और फिर अगर आध्यात्मिक लेवल पर नॉलेज आती है, देन वी बिगिन, जिस चीज को हम पहले प्रिय अप्रिय कह रहे थे, अब हम उसको अनित्य कहने लग गए, हम उसको दुख कहने लग गए, हम कहने लग गए कि we look at pleasant feelings as painful. तो बिल्कुल काउंटर इंट्यूटिव है, ये तो कोई नहीं बताएगा, भगवान नहीं बता सकते. तो हमारा नॉलेज बेस बढ़ेगा, विजडम बेस बढ़ेगा, तो संज्ञा बदलती जाएगी. See that happening. Okay. थैंक यू सर. सर क्या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम इसको एक तरह से मार्किंग कर रहे हैं हर ऑब्जेक्ट पर, जिनने जब बच्चा पैदा होता है, दिस इज अ मार्किंग. That's what it's called, marking also. That is also the designation कहा जाता है, designation दे रहे हैं. जैसे एग्जाम्पल भगवान देते हैं, जैसे कारपेंटर लकड़ी के पर निशान लगाता है, ये जंगल में ये लकड़ी, ये वाली लकड़ी, उसी तरह से आप निशान लगा देते हैं अपने मन में. ठीक है, I think we've crossed the time quite a lot. Sharma ji, anything you want to say?
Actually, I think he's not listening. So we'll request Bhanteji to conclude. सर साहब वैभव भी कुछ कहना चाह रहा था, बेशक इफ इट्स शॉर्ट तो मे बी यू कुड टेक दैट. हाँ, I don't see him around. Okay. हाँ वैभव बोलो. Just a small observation, sir. When I was going through other people's opinion, different, when it is somewhat contrary to my own opinion, then kind of two thought popped up. One is either if it's contrary, then it can be like you are wrong, I am right. And otherwise, other thought can be like it can motivate me to look more closely into the object so that कि मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ, like let me see, check it again rather than just pointing to other person. So that was one of the observation. Thank you. You can look at it both the ways. And third way would be to see that after all it is conditioning. You know, one person is conditioned in a particular way, another person is conditioned in another way, and they will interpret it differently. So it's quite natural that different people will interpret the same event, same phenomena, same picture, same photograph, totally different. सर मेरा छोटा सा प्रश्न था, क्या संज्ञा की स्थिति पर निरोध किया जा सकता है? क्या संज्ञा का? जब संज्ञा को हम लोग जान रहे हैं, क्या उस स्थिति पर ये टेम्परेरी नेचर मानते हुए उसका सजगता के साथ क्या निरोध किया जा सकता है? निरोध तो अल्टीमेटली अज्ञान के निरोध से ही होगा. अविद्यायत्वेव अशेष विराग निरोधा, then the whole chain will stop. You cannot stop it something in between. Cessation जो है, it's ultimate cessation, ultimate freedom. So for that purpose, the ultimate cause has to be removed, which is the ignorance about nature of reality. वो अगर remove हो जाएगी, then we'll have the experience of Nirodha of every element of the dependent origination, including Vedana, including Sankhara, including Vijnana, everything. Everything is cessation, complete cessation. So that is the Arahanta Phal Samadhi. I get it now, sir. I get it. Thank you. Thank you. Over to you, Bhante ji.